नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय और जागरूकता फैलाने वाली संस्था मुस्लिम ब्रदरहुड ने हाल ही में एक कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण माध्यमिक छात्रों को सम्मानित करने हेतु एक विशेष पुरस्कार वितरण समारोह एवं कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित वक्ताओं ने विद्यार्थियों को भविष्य की शिक्षा एवं कैरियर विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उनके प्रश्नों का मार्गदर्शन पूर्ण उत्तर दिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप सही कैरियर चयन में सहायता प्रदान करना था, जिससे वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अनुभवी वक्ताओं ने मार्गदर्शन प्रदान किया। ER शोएब अंसारी, अजीमुद्दीन शेख, करीम समनानी, डॉक्टर जाहिद कानूगा, रज्जाक भाई वोरा और अफजल भाई पांड्या ने छात्रों को मेडिकल, पैरामेडिकल, टेक्नोलॉजी, तकनीकी पाठ्यक्रम, कला, वाणिज्य एवं UPSC, GPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षाविद उपस्थित रहे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर में मुस्लिम ब्रदरहुड सूरत जो है वो लाइब्रेरी एक है और बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, करीब 56-60 साल पुरानी लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी के ज़रिए से जितने भी एजुकेशन जो हो रहे हैं 11-12 उसके बाद कॉलेज, मेडिकल, वो सारे की सारी बुक्स जो हैं वो ये लोग फ्री में देते हैं। और ये बहुत सालों से चलती आ रही लाइब्रेरी है। और इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मलिक करके हैं, जो रिटायर प्रोफेसर है, और एडवोकेट राजू जो है उनके सेक्रेटरी है। तो ये इनके साथ में केपी ह्यूमन फाउंडेशन ने जुड़ के अब एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चालू किया और लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग भी हम लोग दे रहे हैं। और मेन आज का जो प्रोग्राम है वो इन लोगों ने A1 और A2 में जितने भी बच्चे आए हैं सूरत में, जो इनकी पहचान के हैं या समाज के कोट विस्तार के ज़्यादातर बच्चे हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए मिर्ज़ा सामी हॉल के अंदर में एक प्रोग्राम रखा, जिसमें मैं एज यहाँ पर चीफ गेस्ट में बुलाया। इसी तरह से हमारे डॉक्टर नसीम कादरी हैं, यहाँ पर मोहम्मद भाई पीमेट के जो हैं वो है। तो हम लोगों को सबका एक ही ध्येय रहा है कि किसी भी तरह से बच्चों के अंदर अच्छे से अच्छा एजुकेशन को दिया जाए, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हमारे जरिए से हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। यही एक सबसे बड़ा संदेश लेके हम लोग आज आए हैं कि अच्छा एजुकेशन, अच्छा समाज बनेगा और अच्छा राष्ट्र भी बन सकता है। थैंक यू। मारू नाम एडवोकेट मोहम्मद इकबाल मलिक, राजू मलिक की ओर के बने। हूँ छेल्ला 30 વર્ષથી મુસ્લિમ બ્રધરહુડનો સેક્રેટરી છું। આજે સમાજના વિદ્યાર્થીઓ જે A1 અને A2 ગ્રેડમાં સારા ફ્લાઇંગ કલર્સ માર્ક્સે પાસ થયા છે, તે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરવા, તે લોકોને એન્કરેજમેન્ટ કરવા માટે અમે ઇનામ વિતરણ અને સર્ટિફિકેટ, ગિફ્ટ એ લોકોને આપવા માટે એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો। કેટલા બાળકોને આપવામાં આવ્યો? લગભગ અમારે પાસે 375 જેટલાનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે। એ તમામ બાળકોને અમે લોકોએ ગિફ્ટ, સર્ટિફિકેટ અને ટ્રોફી આપી છે। આ સંસ્થા કેવા પ્રકારની કામગીરી કરે છે? સર, આ સંસ્થા 1959માં એસ્ટેબ્લિશ થઈ હતી અને ત્યારથી અમે કોલેજના છોકરાઓને બુક્સ આપીએ છીએ। નજીવા ફંડમાં અમે લોકો બુક્સ આપીએ છીએ। જે છોકરાઓને બુક્સ આપીએ એ લોકોની કોલેજની એક્ઝામ પૂરી થઈ જાય પછી જમાવ કરાવવાનું રહે છે। અને અમારી આ સંસ્થામાંથી મિનિમમ 1000 જેટલા બાળકો દર વર્ષે બુક્સ લઈ જાય છે, યુટિલાઇઝ કરે છે અને એ લોકોની કારકિર્દી આગળ વધાવે છે અને પઢાઈ પૂરી કરે છે। આજે કોણ કોણ ઉપસ્થિત રહ્યું? આજે જનાબ ડૉક્ટર કેપી હ્યુમન ફાઉન્ડેશનના CMD ડૉક્ટર ફારૂક પટેલ સાહેબ હતા, ડૉક્ટર નસીમ કાદરી સાહેબ હતા, મોહમ્મદ પટેલ હતા, પીમેટના સિમગાના પ્રેસિડેન્ટ બખ્તિયારભાઈ નાતલવાલા હતા, રજાકભાઈ વોરા હતા, અમારા સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ ડૉક્ટર જાહિદ કાનુગા હતા, ડૉક્ટર શોએબ અંસારી હતા। કેટલા વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન કરવામાં આવ્યો અને આ કાર્યક્રમ પાછળનો ઉદ્દેશ શું રહ્યો? અમે 375 જેટલા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે। અને આ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવાનું કારણ એક જ છે કે જો તમારા આટલા સારા માર્ક્સ આવ્યા છે તો તમે ભવિષ્યમાં સારા માર્ક્સ લાવી શકશો। તમે નીટ, JEE કે તમે IAS, IPS જેવી જે કંઈ કારકિર્દી તમારે ઘડતર કરવી હોય, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પોઈન્ટ। SSC અને HSC ઇઝ ધ બેસ્ટ પોઈન્ટ। અહીંયાથી તમારા જીવનનો ઘડતરનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ આવે છે અને એમાં જો એ આગળ વધે તો એમની ફેમિલીને
સમાજને દેશને બધાને લાભ થાય એવી રીતના એક સારા સિટીઝન બનવાના હેતુથી આ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો હતો.